Good morning. Start na. Good morning. Na. So, I was there with our favorite KDS sir. So, ticket chalthila. Anyways, how good morning everyone. Na. Those will be watching the highlights also. For also them, very good morning or very good evening according to the time they watch. Na. So, last time किसी current affairs हमें discussion करथलो. I will continue that. Na. ता पूर्वरु just see this is our batch. Na. The Odisha's biggest educators team for OCS exams and all that. Tabare, this is the Adarsh, the principal batch you should follow. Thank you. 8 a.m., 9 a.m., 5 p.m., 7 p.m. All batches are, Jabi classes know they are highly beneficial to all of you. Ma'am knows then Moo, then Arpita ma'am, then Science and Tech ma'am. Everybody is taking. Abhita more timing achi. Sujata ma'am is highly punctual, so she has been given 8 a.m. time. More than 9 a.m. time देइचंदी. Arpita ma'am को 5 p.m. time देइचंदी. ठीक अछि. So this is, she was taking today, I think, Indian polity, right? Indian polity से नोट लेवो दे, right? So some class करता है. Today I will be taking that CA related. My CA will be containing everything, है ना? That कोड़ा की national affairs and international affairs. ठीक अछि. Arpita ma'am, economics fan, please don't miss her classes because economics is the key for any prelims. यदि prelims को crack करे economics have to तुमको पढ़ाया पड़ियो काहे किछि क्वेश्चंस अछि इकोनॉमिक्स तोरा कांसेप्ट थ्रू ही जानि परियो एंड KDS I think KDS is taking there, right? Yeah, good morning. ठीक हो जी. तापरे सो रेट तो जानि छ. This is 4499 for prelims. हाँ मु से दिन कहउथली कि जदि एबे तमा अगर थांदी I would have taken this one, right? एटा मु एटा नै थांदी मु 4499 but कहीं जेतो मते गाइडेंस पे नथिले जदि someone is not there to guide you, you might take this, but according to me you should take this. कहीं prelims plus mains यार तुमको तुम्हें देखो prelims जो prelims attend करछो ना, you will get many thing, है ना? You will get many thing. prelims से तो तुम attend करछो ना, and trust me prelims रो ही तुम्हें बहुत सारा mains को तुम्हें transfer कर परियो बहुत सारा subject, right? तापरे और mains में तो अच्छी, I mean my classes are beneficial for mains, prelims, one day exams, everything. जो तुम देखी तो वो last class से उड़ा देखते हो, right? 9,999 is very small amount यार, है ना? जदि if there is any EMI facilities there, I mean I don't know but sir, I mean number अच्छी contact कर दो भाई. I think there is some EMI facilities there or it isn't been developing. तापरे this is a एथो जो mains appear करिबा को जाउछंदी 7,499, right? So take it यार, मतलब you are just one step away from interview ना, so भला guidance मिलला then you will reach an interview. आउट हला कि optional batch is 4,000 and that is very, I mean बहुत reasonable price होचंदी. आमी जब पढथलु कि सेतले तो 25,000 रोथला optional रोटे but that is very reasonable. Okay. 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 Yeah. Just wait 1 minute. Roshan. को PDF लगेला तुम्हें? को PDF लगेला? Just wait a minute. PDF रे टिके problem अछि. को तो नुवा PDF रे दिखला ना? एटा एबी जो PDF टा दिखले. एटा एटा एबी जो PDF टा दिखले. एटा हो रहा है.
ठीक है देखिए ओके विल गो थ्रू दिस ठीक है डिले ହେଇଯାଇଥିଲା सॉरी है ना सो ठीक है डिले ହେଇଯାଇଥିଲା सॉरी मैंने ठीक है ओके एनीवेज हैव यू heard about this and India's Navy survey vessel Ikshak to be commissioned on November 6th right November 6th रे आज बोले November 6 so आज रे आरो ओपनिंग सेरेमनी हबो कोडी ठीक अछि इक्षक एक्चुअली कोन आछो इक्षक व्हाट डू यू मीन बाय इक्षक इंडियास नेवल वेसल इक्षक ठीक है दिस इज इंडिजिनस सर्वे वेसल इक्षक एक्चुअली कोन आछो वी हैव मेनी सर्वे वेसल देखो गोटे गोटे हला सर्वे पे थाए हला आउ गोटे हला सर्वेलेंस पे थाए हला हला सर्वेलेंस रे इक्षक आसे हला इक्षक ता पूर्वरु आउरी दीटा आईएनएस आसीछि हला आईएनएस आसीछि बट एबे वी आर लॉन्चिंग इक्षक सर्वे आ गोटे सर्वेलेंस जानछो गोटे इंडिया रो गोटे सर्वेलेंस वेसल अछि कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया सर्वेलेंस वेसल तार स्टार्टिंग अल्फाबेट ला डी रो गोटे सर्वेलेंस वेसल स्टार्ट होछि D na so what Ikshaks will do it will survey and surveillance with the both are different अछि हम जो vessel जाउछि ना जो naval ship जाउछि ना it will do monitor the seabed बुझि पाछो सीबेड दबो ओशनग्राफिक नेबे आर फोटोग्राफी नेबे सब जिंस नेबे ता भितरे से माने कोन चैट तयारी करिवे ता साबर समय रियल टाइम डेटा काढिबे रियल टाइम डेटा काढिला परे से माने कोन करिवे दे विल फीड टू द ओसी डिपार्टमेंट ओके सेटू से माने कोन माइनिंग कर परिबे एक्सट्रैक्शंस कर परिबे जहां भी कुछ कर परिबे बट मु जो कहउतली गोटे सर्वेलेंस वेसल अछि आईएनएस ध्रुव हला डोंट फॉरगेट अबाउट दिस INS ध्रुव it is a very important vessel kain golo this itself is 10,000 tons 10,000 tons रो vessel INS ध्रुव एटा एबे रिसेंटली न्यूज रे भी थिला काहे कि जेतो तमे ओके जेतो तमे ना जेतो तमे कोडी सपोज किछि मिसाइल्स लॉन्च करछो ना ठीक अछि सेतोले किछि किछि शिप्स ना से माने ट्रैक करंती सपोज दिस इज बे ऑफ बंगाल ठीक अछि एठू हमें किछि मिसाइल्स लॉन्च करछु चाइना रो वेसल्स कोन करिबा छ चाइना रो वेसल्स रे यंग वांग गोटे वेसल्स अछि से माने आसीबे एंड इंडिया रो मिसाइल्स को ट्रैक करिवे ताकू कोनती आईएनएस रो ध्रुव कोनती माने चाइना रो ध्रुव कोनती ताकू कोनती यंग वांग इंडिया रो कोन अछि ध्रुव ताकू सर्वेलेंस वेसल कोनती एंड इक्षक इज सर्वे वेसल जस्ट मॉनिटर करिवो दे विल जस्ट मॉनिटर आउ किछि करिवोनी हैला सीबेड मॉनिटरिंग करि परिवो एंड तुमको ध्रुवटा मन रखिया पड़िवो केबे भी पचारे एडा एक्चुअली पचारंती ए क्वेश्चंस ओडा बुझि परछो सो एडी कोन कहूची आई मीन द इंडियन Navy indigenous will build survey vessel large Ikshak will be commissioned at Kochi है ना Kochi number 6 Kochi then ceremony will be presided over Admiral DK Tripathi आउट कथा चीफ ऑफ नेवल स्टाफ्स के DK Tripathi कहेंगे it is very I mean it's a very good question for a one liner exam Ikshak is the third ship of this Indian Navy commitment to building advanced platform आउट दीटा शिप हेगलन गोटे संध्या रानी थिला बोधे ना तुम सर देखि देबो आउट दीटा शिप ता पूर्व आछि आउट हला द वेसल इज बिल्ड बाय गार्डन शिप बिल्डिंग देखो एक्चुअली कमिशन कोड होची कोची रे होची हला कोचिन रे होची बट बनिथिला कोटी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड कोलकाता सो एडा गोटे स्टेटमेंट भी हे परिबो कि द कमिशन हेतला कि कोलकाता रे या बिल्ड हेतला कोची रे हेतला एमिता उल्टा स्टेटमेंट भी देई पारे तुम केतो भी ठीक अछि तो यू हैव टू सी तापरे it is highly देखो anything more than 75% ना जदि तुम 75% कंटेंट जदि इंडिया रे बिल्ड कर दोछ ना दैट इज इंडिजिनस तो 80% अछि आर इंडिजिनस कंटेंट दैट शोज दैट वी आर हाईली आत्मनिर्भर इन दिस तापरे कोन अछि एचडीआर असिस्टेंस पे इट इज ऑब्वियसली जदि हमें
आपदा टाइम रे हम तो HADR भी परफॉर्म कर परिया राइट यदि किसी बे ऑफ बेंगल रे किसी साइक्लोन आसी गले हम से सर्वे वेसल को तको मेडिकल असिस्टेंट पे कन्वर्ट कर परिबा दैट इज अ वेरी गुड थिंग तापरे इट द फर्स्ट एसपीएल शिप डेडिकेटेड अकोमोडेशन फॉर द वुमन है ना तो आ भितर तुम कौन ए शिप रे 100% वुमन कैन बी अकोमोडेटेड है ना बुझी पारछो तांको पे से फैसिलिटीज दिया छै दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपोर्टेंट एंड एटा काहेकि इंडियास मैरिटाइम पावर एंड हाइड्रोग्राफिक एक्सीलेंस पई एटा दिया जाय छै ठीक अछि सो ऑब्वियसली जदी 80% आर इंडिजिनियस इन बिल्ड देन एमएसएमई रे कंट्रीब्यूशन इज वेरी हाई काहेकि तांको टू सब स्टील हे गला या तमरो जहाँ भी एल्यूमिनियम होला सब तांको टू निया जाउछ ओके सो एटा जस्ट एक क्वेश्चन बनै छी I hope that is visible ना try to attend this question ना आउ जे वीडियो हाइलाइट्स देखते हो सेटा पॉज मारी के अटेंड करिवो with reference to INS extract recently commissioned into Indian Navy मु काहे की क्वेश्चन दोछ बिकॉज़ आगु को एसओ एग्जाम भी अछि है ना एसओ एग्जाम जो सेक्रेटरी भी आसीबो तो सेक्रेटरी एसओ एग्जाम रे बहुत हाई लेवल क्वेश्चन पचार छन लास्ट टाइम जानछो केमि से माने क्वेश्चन पचारुथले सो तुम एटा एक क्वेश्चन करी के देखो extract meaning the guide. It is the third ship of fourth vessel survey vessel project contract in 2018. The vessel will be commissioned at Naval Base Kochi in 2025 by Admiral D.K. Tripathi. The ship has been built with 100% indigenous content as part of MII initiative. It is primarily designed with anti-submarine warfare and fleet combat operation in the Indian Ocean. Now try to answer this question. है ना INS extract opera कौन देछ तुम कोड़ा लगुच आई मीन समथिंग इज फिशी राइट एडा कोन प्राइमली डिजाइन फॉर एंटी सबमरीन एटा तो गोटे गाइड वेसल थिला इट्स अ गाइड वेसल मतलब इट इज नॉट एडा वॉरफेयर नु एडा इट्स अ गाइड वेसल सो दिस ऑप्शन इज गॉन ना एडा पळेला द शिप हैज बीन 80% नो इट इज नॉट 80 इट इज 100 इट्स नॉट 100 इट इज 80% ठीक अछि दिस इज 80% इंडिजिनस कंटेंट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ठीक अछि तापरे extract the guide it is the third ship ठीक अछि एटा ठीक अछि तापरे it will be commissioned at Kochi and don't forget it was built at GRSE कोलकाता ठीक अछि बनाई जी कोलकाता रे कमिशन होबो कोची रे सो आमे आकु कोन अरेबियन सी पई इट्स वेरी इंपोर्टेंट सो व्हाट विल बी द आंसर या 1 and 2 क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस है ना तो टिके से लेवल रे पढे को चेष्टा करिवो नले क्या फायदा पढ़ी ठीक है हाँ सो एटा जानी थो एटा के अक्टोबर 28 2025 रे गोटे क्लिपिंग आनी छी ए स्टार्ट फॉर नॉर्थ साउथ कार्बन मार्केट कॉर्पोरेशन है ना द लिंकिंग ऑफ कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBM कौन दिया को CBM with Indian carbon market is significant hurdles at cross actually कौन है जो एबे कोन जाय इंडिया आउ यूरोपियन यूनियन भितरे ट्रेड डील चलछि हला ट्रेड डील चलछि बे ऑलमोस्ट अराउंड 50 टॉक्स हे गलानी बट वी आर एक्सपेक्टिंग ए ब्रेक थ्रू विद इन 2 वीक्स यदि 2 वीक्स रे ब्रेक थ्रू आसी जिवो देन ए जो कोन होचंदी आको ए जो हमर कोन अछि जो नॉर्थ साउथ जो कार्बन मार्केट अछि ना से ट्रेड डील बिते ए जिंस भी पॉसिबल एक्चुअली कौन एटा होची मु कहूची सुनो जो इंडिया रे जो कंपनीज अछि ना सपोज टाटा स्टील अछि हमारा टाटा स्टील हला टाटा स्टील एमिट्स टाटा स्टील इज गोइंग टू एक्सपोर्ट सम स्टील टू यूरोपियन मार्केट ठीक अछि से सपोज 1 टन स्टील जदी यूरोपियन मार्केट को पठेबो ना ऑब्वियसली से 1 टन स्टील करिया पे से केते कार्बन तो एमिट करथबो ना किंतु यूरोपियन यूनियन रे जहां भी स्टील कंपनी अछंती ना से माने जेतल स्टील बनउछंती ना दे यूज टू गिव टैक्स कोन टैक्स कार्बन टैक्स दियंती राइट कार्बन टैक्स दियंती ओके जेतले यूरोपियन यूनियन जो स्टील प्रोड्यूस करंती से माने कार्बन टैक्स भी दियंती तो तांकर कोन होचे टैक्स बढ़ले कोन तांकर प्राइस बढ़ि जिवो बट जदि गोटे इंपोर्टर अछि यूरोपियन यूनियन रो से माने कहबे नाइ मो टाटा स्टील रो किछि
steel जदि मैं import कर देवी then I might get rid of this carbon tax but no एबे कौन होची से गोटे यूरोपियन यूनियन को कहउछन गोटे सीबीएम सर्टिफिकेट इश्यू करछन्ते सपोज गोटे इंपोर्टर जदि टाटा स्टील को जदि हम तांकर जो स्टील इंपोर्ट करिवे ना दे हैव टू बाय सीबीएम सर्टिफिकेट दैट मीन्स 1 टन रो जो 1 टन आई मीन कोन 1 टन ऑफ कार्बन एमिशन जदि हेची तार प्राइस तांको पे करबा को पड़िबो का को करिया को पड़िबो इंपोर्टर को आर यू गेटिंग माय पॉइंट importer has to pay the price of 1 ton of carbon emission if they are importing steel from Tata आगु एटा बुझे दोछ आगु अछि देखो एटा कोन अछि देखो the new strategic EU India agenda includes a provision of European Union to the Indian carbon market with the carbon border adjustment mechanism मु कोनी कि एबे इंडियन यूरोपियन जोड़ा अछि now we जतो कार्बन मार्केट को जो एक्सेस करबा अछि ना सो वी हैव टू गो थ्रू दिस कार्बन बॉर्डर को ना सो जो इंडिया रे जो स्टील टा जीवो ना यूरोपियन यूनियन को आ बॉर्डर भीतर आसला पूर्व इट हैज टू गो थ्रू सीबीएम इट हैज टू गो थ्रू सीबीएम हैला तो इंडिया कार्बन आउट कथा चैलेंजेस कौन इंडिया कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम और आईसीएम इज एन इवॉल्विंग आर्किटेक्चर कंपेयर टू यूएस ओल्ड डिकेड एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम एक्चुअली कौन ए जो सीसीटीएस जो अछि ना इट्स बीन लॉन्च रिसेंटली 2023 रे लॉन्च हेतला ठीक अछि आ यूरोपियन यूनियन रे जो कार्बन मेकानिज्म अछि ना एटा 2005 रे लॉन्च हेतला ठीक अछि तो तांकर जो कार्बन मेकानिज्म थाए ना तांकर जो टैक्स लागे ना दे आर हाईली इवॉल्व्ड ठीक अच्छे से जानी पारती कि से केते कार्बन एमिशन करुँच बट से केमी जानबे कि इंडिया रे केते कार्बन एमिशन होची इंडिया केमी जानबे कि इंडिया केमी एमन जो डाटा भूल देले सेते पई इंडिया रे कोन अछि इंडिया कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम कोन होची सपोज गोटे कंपनी जदी केते 1 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस करची आ 1 टन ऑफ कार्बन एमिशन करची ना से डाटाटा एमन रखिबे के रखिबे कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम एमन रखिबे और आईसीएम कहती है सो से माने तापरे परे ट्रेड करिवे द करंट इंडियन क्रेडिट्स आर ऑफन बेस्ड ऑन इंटेंसिटी इंप्रूवमेंट्स और प्रोजेक्ट बेस्ड ऑफसेट्स नॉट ऑफसेट एमिशन कैप्स ठीक अछि विदाउट लीगली बाइंडिंग कैप्स एंड स्ट्रांग पेनल्टीज यू रेगुलेटर्स मे नॉट कंसीडर इंडियन क्रेडिट एज इक्विवेलेंट देखो आउट कथा देखो जदी इंडिया रे सीसीटीएस लागि छै ना सो टाटा स्टील गोटे 1 मिलियन टन प्रोड्यूस करया पई ला इंडिया रे सीसीटीएस माने हला वी आर आल्सो गिविंग कार्बन टैक्स का को दोछ टू गवर्नमेंट दोछ हला गवर्नमेंट दोछ 1 मिलियन सपोज 1 मिलियन टन सो इंडिया जो टाटा स्टील अछि जदी से यूरोपियन यूनियन को जीवो ना सो यूरोपियन यूनियन विल आल्सो फाइन कोन आंको पर कार्बन टैक्स लगेबो ठीक अछि बट जेतोर से कार्बन टैक्स लगेबे सो इंडिया रो जो कार्बन टैक्स देछन गवर्नमेंट को सेटा से माने माइनस कर देबे आको कोन इंटीग्रेशन कोनते बुझि परछ मु कोन कहूची जेतोल गोटे इंपोर्टर इंडिया रो स्टील जदी इंपोर्ट करिवो ना सीए तारो माने इंडिया जो ये जो सीसीटीएस रो सर्टिफिकेट से देखेबो देखो तमे जदी इंपोर्ट करछ ना मु ऑलरेडी पे कर सारची सो यू डोंट नीड टू पे दैट मच अमाउंट ऑफ टैक्स माने कोन टैक्स माने कोन इन द फॉर्म ऑफ सीबीएम सर्टिफिकेट्स है ना जदी 5टा जदी किनिबार थिला से मन 3टा किनिबे काहे कि 2 रे इक्विवेलेंट एड ऑलरेडी पे करा जाय छै इंडियन गवर्नमेंट को सो दैट इज व्हाई द इंटीग्रेशन हैज बीन टोल्ड बुझि परछो मार्केट रे इंटीग्रेशन चलछि से जिंसो कहउछन है ना या ठीक अछि सो the carbon price in India's ICM currently ranges between £5 and 8 as a ton, significantly lower than the European ETS price of 60 to 80. So एटा टिके प्रॉब्लम थिला ना आमे कोन इंडिया रो ICM प्राइस केते 5 euro कोन 5 euros and 10 euros per ton जदि per ton जदि हमें 10 euros दोछु and सेठी केते दोछंती यूरोपियन 60 ton so it's a mismatch बुझि परछो टॉपिक कोन अछि इंडिया यूयू कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मेकानिज्म ठीक अछि कोन अछि एडी कोन अछि इंडिया रो कार्बन एमिशन पई केते वी आर पेइंग अराउंड 10 euros एंड सेठी केते 80 euros तो ता पई कोन चलछि ट्रेड रे एडा भी
एटा गोटे मुद्दा अछि ठीक अछि काहे कार्बन टन रो मिसमैच न हो कार्बन टैक्स रो मिसमैच न हो ठीक अछि so कोन द प्राइस गैप कुड रिजल्ट इन इंडियन एक्सपोर्टर फेसिंग बोथ इंडियन कंप्लेंट कॉस्ट एंड द फुल सीबीएम लेवी बुझी पारछ त माने कोन इंडिया इधर प्रॉफिट रहला त इंडियन एक्सपोर्टर प्रॉफिट रहले बुझी पारछ जो इंपोर्टर थबो जो यूरोपियन रो जो इंपोर्टर थबो सी प्रॉफिट रहबो that's a big problem in this तापर कहूँ CBM is viewed by India and other developing countries as unilateral and protectionist measure आउ इंडिया कहूँ तमे जो CBM टैक्स दोचो है ना it is also protectionist measures तमे आमो गुड्स ऊपर टैक्स लगाउछो एटा कोन कि एटा सब कोन WTO रे सब एक केस रा फसी जाय छी ठीक अछि टैक्सेस ओडा सब कोन WTO रे सब फसी जाय छी सो एटा टिके कोन मेंस कंटेंट थिला ठीक अछि so amar kon achi india's carbon market kon achi it is designed to help india meet its environment commitment particularly the goal of reducing carbon eta gdp by 45% of 2030 to mone achi ei jo 45% by 2030 na this was asked in prelims right eta prelims report thara na amar dekho যেতলে कार्बन एमिशन पे पड़िबो तम कोप 26 टा केबे भूलिबोने ठीक अछि कोप 26 रे इंडिया देतला पंचामृत टारगेट देतला पंचामृत है ना आजि का डेट रे इट इज वन ऑफ द स्टैटिक पोर्शन पंचामृत केबे भूलिबोने दिस इज वेरी इंपोर्टेंट ता भितरे जतला में से 2021 नवंबर रे पीएम एटा थिला ग्लासगो समिट थिला ठीक अछि ग्लासगो समिट थिला एठी पांचटा टारगेट देतले कोन टारगेट थिले 500 gigawatt of renewable energy by 2030 बुझी पारछो तापर कोन थिला emission reduction of 45% of intensity है ना with respect to 2005 levels एटा मु कहि देबी एटा कोन कहूछ तापर कोन थिला reduce 1 billion tons of carbon emission by 2030 right एटा थिला आउ कोन थिला एटा कोप 26 रो टारगेट थिला तापर आउ कोन थिला net zero by 2070 बुझी पाछो एटा थिला net zero by 2070 राइट आउ गोटे टारगेट थिला इफ आई एम मिसिंग कौन थिला हाँ आउ गोटे थिला कि 50% ऑफ इंडियास रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 ठीक अछि इंडिया शुड हैव 50% ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 एटा थिला 5 टारगेट्स एटा तुमको मन रखिया पड़ियो घोषि दियो कुछ भी करो आ एटा जो अछि माने 45% ऑफ कार्बन एमिशन रिडक्शन हम करिया को पड़ियो एट 2005 लेवल्स एडा भी 2030 रेस्पेक्ट एडा मु कहूछ एडा बुझूछ एटा कोन एक्चुअली देखो जेतले इंडिया 2005 रे सपोज इंडिया 100 यूनिट्स ऑफ जीडीपी जदी प्रोड्यूस करिया पई से माने 100 टन ऑफ कार्बन एमिशन करूथले ठीक अछि जदी 2005 रे 100 units of GDP produce करा पे यदि 100 ton of carbon emission करूथले it has to be reduced by 45% of carbon emission same by 2030 रे same unit same 100 GDP produce करा पे हेले you need to reduce this by 55 ton of carbon ठीक अछि एटा 100 थिला आको 55 टन करिया पड़िबो बुझि पा this is called this is something called आमे एटा कहबे क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जोडा क्योटो प्रोटोकॉल रे थिला मने क्योटो प्रोटोकॉल कोन कहचले क्योटो प्रोटोकॉल कोन कहतले you have to follow CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म गोठा जॉइंट इंप्लीमेंटेशन आउ एमिशन टारगेट्स एटा थिला ठीक अछि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म रे कोन करछि you have to imply what new technology so that तमर reduction of carbon dioxide can be minimum तमे जो इंडस्ट्री जो पॉल्यूशन दोछ ना ताको रिड्यूस करा पे तमको न्यू टेक्नोलॉजी दरकार दैट इज डन बाय क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म आई होप यू अंडरस्टैंड दिस है ना 100 यूनिट ऑफ जीडीपी प्रोड्यूस करा पे if you are emitting 100 ton of carbon dioxide in 2005 now it has to be reduced by 55 ton of carbon dioxide in 2030 for producing 100 GDP
100 unit of GDP, right? एटा टिके जानी था, ठीक अछि. And why it is important? एटा हला आजिका डेट रे ट्रेडमार्क क्वेश्चन सोडा पचासला. तापरे where is the next COP summit? Next COP summit आउ 2 सप्ताह पर COP summit आसीबो. Next COP summit कोड हबो 2025 रा COP 26 27 28 एटा बोते COP 30 या 30 ना. Next COP 30 बोते एटा हबो कोडी आंचो. Can you tell me where is the next COP summit? एटा ब्राजील रो वाला, मतलब ब्राजील रो बस we will discuss, ठीक अछि. So एटा सब मन रखतबो है ना. Recognition of India's carbon credit, the है ना, इंडिया जो CCTS अछि है ना, CCTS है, तो यूरोपियन may allow Indian exporters to offset their CBM liabilities. मु कोन थली कि जदि Indian companies have already paid the CCTS tax, से tax टा माइनस हे जिवो जेतो यूरोपियन जो इंपोर्टर थबो सी जो CBM किनु थबो ला माइनस हे जिवो काहे कि सी काहे बेसी पैसा दबो. मुसिया कोनी जदि 1 टन रो स्टील जदि किणुचु एंड 1 टन रो 1 टन रो कार्बन एमिशन जदि होउची एंड 1 टन रो कार्बन एमिशन रो प्राइस ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट नहीं सारिछि. सपोज 20 यूरोस नहीं सारिछि हैला, 20 यूरोस नहीं सारिछि एंड अंकोर जदि 1 टन रो कार्बन एमिशन रो जदि 80 यूरोस अछि हैला, 80 यूरोस अछि. नाउ द CBM सर्टिफिकेट्स रे केते आसीबो 60 यूरोस आसीबो, 60 यूरोस आसीबो. बुझी पाछ मु कोन कहूची से ऑलरेडी 20 यूरोस दे दैछि. सेते पय सी कहूचे द यूरोपियन यूनियन मे अलाउ इंडियन एक्सपोर्टर्स टू ऑफसेट देयर, एट ऑफसेट हे गेला आ तो कोई 80 यूरोस पे करियार नै, से ओनली पे ही विल ओनली पे 20 यूरोस. ए जिनसाडा से कहूची देखो तो अवॉइडिंग डबल कार्बन टैक्सेशन. मु कोनी जदी से 80 यूरोस पे कर देथा से 80 पे 20 यूरो पे कर देथा देन आकु कोन डबल कार्बन टैक्सेशन हे जाता. This would prevent Indian industries from paying both domestic carbon prices and CBM levies. I hope you are getting, है ना. वो टिके explain करे चेष्टा करते हैं on exporters to the UE. तापर कौन है mutual trust in MRV system. For this linkage to work, both sides needs to agree monitoring, report and verification. माने obviously तमे देखो तमे जदी भी कौन कोचो कार्बन एमिशन करछो ना ताको मॉनिटर भी तो करिया पड़िबो ना. तो यूरोपियन यूनियन वाला भी आसीबे, इंडियन लोक भी सेडी जिबे मॉनिटर करिया पे. तो तार कि मेकानिज्म थबो आगु को, ठीक अछि. कंक्लूजन कोन करबे I mean this is ICM CBM linkage could redefine global carbon governance, aligning trade with climate goals, है ना. हम जेतो कोड प्रोटोकॉल थिला CDM मेकानिज्म हम एडा पॉइंट्स सब ऐड कर परिया. जेतो तमे एनवायरनमेंट ऊपर लिखछ ना, ग्लोबल एनवायरनमेंट ऊपर जदी किछि क्वेश्चंस आछि ना, so this would be a perfect answer आगु कोन लिखि परिबो, है ना. But without credible reforms, price alignment and sustained political commitment, obviously political commitment is very important. काहेकि तमे जदी कहबो कि नै मु कहलाई जळाई देन that is very bad. So ताप में कोन तुमको रिन्यूएबल एनर्जी आने पड़े, पैसा खर्च करिया पड़िबो, you have to invest a lot. सेति पे तो अडानी बहुत सोलर एनर्जी पार्क इन्वेस्ट करछि राजस्थान गुजरात रे, बुझि पारछो. एंड अच्छा the true test of the new EU strategic agenda. So एडा लगी पर जणा पड़िबो कि हम जतो इंडिया यूरोपियन ट्रेड डील हे जबो ना ताबे तो सब जणा पड़ि जबो. एबेडा कोन जस्ट एडा फेज रे आछि एटा, ठीक अछि. तो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एडा बनै सम पई. ओके with reference to carbon trading and European Union's carbon border adjustment mechanism, consider the following statement. The CBM functions as a carbon trading system allowing non-European CBM functions as a carbon trading system allowing non-European exporters to buy and sell carbon credits within European emission trading system. CBM functions as a carbon allowing a non-European exporter. Tapre the carbon credit trading system in 2020 in India is being implemented under the supervision of Ministry of Renewable Energy. एटा भी ओटा पॉइंट. तापरे दुख दर्द पीड़ा
the CBM allows Indian exporters to trade carbon credit directly with EU emission trading system. The Indian carbon market aims to reduce the emission intensity of India's GDP by 55%. Our answer कौन है परिवो? Indian carbon aims to reduce the emission intensity of India's GDP by, that is 45%, na? That is 45%. B dojo. The CBM functions as a carbon trading system, allows non-European to buy and sell carbon. देखो CBM जोड़ा कहूली है ए सर्टिफिकेट किए बाय करिवो एटा गोटे यूरोपियन लोक ही बाय करिवो यूरोपियन यूनियन रो लोक ही बाय करि परिवो बुझी परछो कोजी अलाउ नॉन यूरोपियन सीबीएम सर्टिफिकेट गोटे यूरोपियन यूनियन लोक ही बाय करि परिवो काहे कि सी ता पैसाटा देछि सी जहाटू इंपोर्ट करूची ता पे से टैक्स दबो ना इट डजंट अलाउ नॉन यूरोपियन एक्सपोर्टर इट्स अलाउ यूरोपियन एक्सपोर्टर एडा नो सीबीएम functions as a carbon trade system allowing European exporters to buy and sell carbon credit within European emission target system. बुझी पारछो CBM सर्टिफिकेट इंडिया बाय करनी इंडियन लोक बाय करनी इट इज बॉट बाय यूरोपियन वाला कहीं सी इंपोर्ट करछु ना सी इंपोर्ट कला बेलू सी टैक्स दबो एंड दैट टैक्स इज इन द फॉर्म ऑफ CBM सर्टिफिकेट टैक्स में से कार्बन टैक्स था कुछ तापरे द कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023 in India is being implemented under the supervision of Ministry of Renewable Energy. This is also wrong. It's Ministry of Power. Okay. Ministry of Power. Ministry of Power आपको supervise किए करजे Bureau of Energy Efficiency. मन रखता हूँ. Purely factual data. आज तुम किसी कर परिबे नहीं. Bureau of Energy Efficiency. ठीक अछि. नेट भी चले ओके ठीक है द सीबीएम अलाउस इंडियन एक्सपोर्टर्स टू ट्रेड कार्बन कौन एटी अछि okay the CBM allows Indian exporters to trade carbon credit directly within the EU emission trading system question the CBM allows Indian exporters to trade carbon credit directly with EU emission trading systems. Obviously, integration होची ना, सिद्धिमें कोच. तो our answer है ला only 3 है ना. कहीं को जल्दी integration हो बनी तो trade किम करिबो, किम तो minus करिबो, यहाँ देच. तो our answer ला CBM allows Indian exporter to trade carbon credit directly with the EU emission trading system. माने कौन Indian exporter जो CCTS कोच ना, CCTS आउ EU ETS रो इंटीग्रेशन कथा कोच एडा ही कोच सो दिस इज अ क्वेश्चन है ना तो यू ट्राई टू एमदी क्वेश्चन आसी पारे एडा यूपीएससी भी इंपोर्टेंट एडा ओके एडा गोटे क्वेश्चन दिला 2011 रे रिगार्डिंग कार्बन क्रेडिट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट कौन द कार्बन क्रेडिट सिस्टम वाज रैटिफाइड इन कंजंक्शन विद क्योटो प्रोटोकॉल carbon credits are awarded to countries or groups that have reduced greenhouse gases. The goal of carbon credits is to limit the it's not correct it's to limit the increase of carbon dioxide. Carbon credits are traded at a price fixed from time to time by the United Nations Environment Program. Not correct coach na? This is not correct coach. Not correct the carbon credit system was ratified in obviously Kyoto protocol के पैसा 1997 रे तापर कौन है joint कौन है CDM आस्तला तापर CD carbon trading आस्तला तापर कौन है European emission targets आस्तला मुझे बातो so it was in conjunction with Kyoto protocol तापर कौन carbon credits are awarded to countries or groups that have reduced greenhouse gases obviously जो
जदि इंडिया रो कोटा हाँ बुझी पारथो सो दिस इज आल्सो राइट है ना तापरे द गोल ऑफ द कार्बन क्रेडिट्स टू लिमिट द इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिस इज आल्सो राइट एटा भाबलो द कार्बन क्रेडिट्स आर ट्रेडेड एट अ प्राइस फिक्स्ड फ्रॉम टाइम यूएनएपी नो यार आई मीन कार्बन ट्रेडेड इज एट पर मार्केट जहा कोच यूरोपियन यूनियन रो मार्केट जहा कोच इंडियन मार्केट जहा कोच है ना तापे की होची सीसीटीएस अछि तांको पे की अछि ईटीएस अछि से माने डिसाइड करिवे सो दिस इज रॉन्ग तब आउट this was in 2023 recent exam the carbon statement on the carbon markets are likely to be one of the most widespread tools in the fight against climate change right tapare hochi the carbon market transfer resources from the private sector to the state eta doubt he paribo but actually eta kon hobo both the statements are correct and 2 is not the explanation correct and 2 is not the correct explanation of statement 1 statement 1 is correct but 2 is not correct both are incorrect ठीक अछि अरे देखो एटा कोन अछि एटा गवर्नमेंट टैक्स दोछ सेकंड स्टेटमेंट कोन दोछ इट्स लाइक सीसीटीएस है ना गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करछ टैक्स राइट तमे जदी टाटा स्टील को कहै छै तमे 1 बिलियन कार्बन एमिशन करे परिबो बट दे हैव एक्सीडेड टू 2 बिलियन गवर्नमेंट कोन पके देला टैक्स पके देला तो कोन हला प्राइवेट टू गवर्नमेंट पड़ेला पैसा बुझी पार तो स्टेटमेंट कोन कोच कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट ठीक अछि कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइडस्प्रेड टूल्स इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज दिस इज आल्सो राइट तमे जते टैक्स पकेबो दैट इज आल्सो करेक्ट तो यदि मो पर बेसी टैक्स आसी जिवो देन मु तो लिमिट करा चेष्टा करबी बट 2 is not responsible 2 तो नो ना but that doesn't mean that 2 is the reason for 1 सेटा तो नो ना देखो both statement 1 and 2 and 2 is not the correct explanation for state okay तो 2 is not the reason for 1 काहे कि एटी स्टेट एंड प्राइवेट रे चलछि एंड एठी कोन चलछि तुमको कोन करे छै तुमको कोन करे छै तुमको you have to fight against the climate change so you have to control the carbon emission but एठी कोन टैक्स लगौछि so this is not I mean कोन this is not the reason ठीक अछि तार आर आंसर हो बोथ 2 ठीक अछि both statement are correct 2 is not the correct explanation for statement 1 ठीक अछि ताबरे RTI Act completed 20 years report shows us lapses October 12 2025 हला RTI Act 20 years रो बर्थडे हला जो effective implementation हेतला RTI Act मानले 2000 रे 2005 रे implementation हेतला ना तो 20 years हेगला सेते पई RTI Act to complete 20 years shows report RTI Act marks 20 years. A report reveals several commissions are defunct and lacking leadership, causing significant delays in the information access. RTI Act is very important. ठीक होची 20 वर्ष कंप्लीट कर देला एतरे काहे सिंपल जिंस आदि किछि नाही काहे RTI Act ऊपर एतरे भी क्वेश्चन पचार थिला सिविल सर्विस रे ठीक अछि देखि दबो गोटे सेक्शंस को नेकरी कोन कोच द सिटीजन ऑफ इंडिया हैज द राइट टू गेट इंफॉर्मेशन है ना राइट टू गेट इंफॉर्मेशन कोन freedom of speech er Australia freedom of speech article 19 subclause 1 subclause a er Australia eta supreme court define korchi ठीक अछि तबरे 2005 gives every citizen of India right to get information from any public authority government offices ministry obviously you can abstract any information from the government offices ministries and bases है ना मतलब टाटा कोन होय छै मतलब सेल रो किछि जिंस आनियार अछि देन मु आनी परिबी ऑफ कोर्स इट शुड बी इन पब्लिक डोमेन माने कार पर्सनल लिबर्टी को यदि हार्म न करे इट हेल्प्स पीपल नो हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स डिसीजंस आर मेड इवन द पीएमओ ऑफिस रो प्राइम मिनिस्टर खर्च भी लोक आरटीआई करथले तो बुझी परछो इट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस अछि आगु को बहुत बड़ बड़ जिंस अछि कहबार अछि एवरी गवर्नमेंट ऑफिस हैज अ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ता पई ओडा असिस्टेंट पीआईओ भी दिया जाउची है ना पुलिस स्टेशन रे की हे परिबो सब इंस्पेक्टर भी हे परिबो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर राइट
any citizen can file an RTI application in writing or online. RTI तुम जो ऑनलाइन करा तो RTI वेबसाइट को पळेबो, you can do online. The PO must reply within 30 days. This is the catch. बुझि परछो किछि किछि एग्जाम रे PO must माने सपोज मु किछि RTI फाइल करली, if I am filing any RTI तो I should get a reply within 30 days. आउ जदि कार लाइफ एंड लिबर्टी कंसर्न अछि then it should be within 2 days 48 hours. So this is a very catch point. एटा तो मन रखिया पड़िबो, घुसिया पड़िबो 30 days and 48 hours in case someone's life and liberty at stake. ठीक अछि. तापरे if the application is not satisfied they can appeal at first appellate authority and later to the central and state information commission. ठीक अछि. एटा हला सेकंड appellate authority जोडा की CIC. तापरे देखो किसी सेक्शंस अछि जोटा कि तुम इट्स वेरी इंपोर्टेंट है ना. अबाउट RTI Act 2005 सेक्शन फॉर रिकॉर्ड्स ड्यूली कैटलॉग्ड एंड इंडेक्स्ड माने तमर जो ऑफिस अछि ना, ऑफिस जहाँ भी सब डॉक्यूमेंट अछि रिकॉर्ड अछि ना ताको तुमको कैटलॉग हिसाब रे तो इंडेक्स हिसाब रे तुम सेव करे पड़ो. फाइल्स हे गला या तुम डिजिटल डाटा रे सेव करे पड़ो काहे कि सेटा पब्लिक तुम वेबसाइट रे तुम शो करे पड़ो. ठीक अछि. एबे सेल हे गला या गवर्नमेंट PSU हेगला तांकर सब वेबसाइट थाए एंड सेवन सब कोन तमर से डेटा शो करंती वेबसाइट रे एज कैटलॉग एंड इंडेक्स. तुम जानतो नो योर कंपनी एंड ऑल दैट ताबे समान डेटा ऑलरेडी देउछन ताकि RTI रो एप्लीकेशन बेसी न बढ़ो. तब सेक्शन 6 हैला एंटाइटल्ड ए पर्सन टू मेक अ रिक्वेस्ट इन राइटिंग टू द सेंट्रल और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर. ऑब्वियसली यू नीड ए पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इन एवरी गवर्नमेंट ऑफिस सो दैट आई कैन मेक ए रिक्वेस्ट इन राइटिंग. मु काहा को लिखिबी गोटे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को तो लिखिबी ना. Section 7 requires public information officer to either provide information or reject request within 30 days. So 30 days is the catch point, है ना. If I am writing any application, मोते AI जिनसो दरकार, so within 30 days you have to approve. तापर कौन section 19 not received a decision within 30 days may appeal कौन जदि मोते 30 days रो जदि मिलुनी then I have to appeal कोडी either central information commission जो स्टेट है तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी तापर सेकंड अपीलेट अथॉरिटी सी जहाँ तक स्टेप्स देते हुए. बट आई कैन अपील इफ माय कंप्लेंट इज नॉट रिसीव्ड और गॉट आंसर विद इन 30 days. एग्जाम्पशंस कौन अछि सेक्शन 8 इज वेरी इंपोर्टेंट. एग्जाम्पशन डिफेंस नेशनल सिक्योरिटी सेटा आगुर थाए. ठीक अछि सेटा सब आगुर थाए. तापरे RTI ऊपर माडो के हेतला. RTI ऊपर माडो हेतला डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट रे हेतला जो 2024 रस्तला या नहीं 2023 रस्तला. ठीक अछि. जेतला डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आस्तला ना देयर वाज अ डिबेट बिटवीन कोन फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस प्राइवेसी है ना. बुझे जो आर्टिकल 21 अछि आर्टिकल 19 वर्सेस आर्टिकल 21. ठीक अछि. काहे जेतलो DPDP एक्ट आस्तला ना सेट ओटा सेक्शन थिला कि तुम सपोज जे पर्सनल इंफॉर्मेशन तुम जदि बाहर करबो ना कार पर्सनल इंफॉर्मेशन DPDA रे से ओटा सेक्शन 44 इंसर्ट करले एंड सेक्शन 44 DPD इंसर्ट करले एंड दे अमेंडेड सेक्शन 8 of J of RTI Act. कौन कर ले पर even personal information cannot be given at request. बुझे पारछो आगुरी कौन थिला जदि कौन for a larger public interest रे you can have the जदि public interest भाई तुम personal information देई परिबो. ठीक अछि. बट एबे कौन करछि DPDA Act रे कौन करछि तुम personal interest भी देई personal information देई परिबो. बुझी पारछो you can't give the personal information even it is for the public interest. So माने सेतोल टिके माडो हेतला काहे जदि तुम देई परिबोनी त कॉन्ट्रैक्टर कोन खर्च करछि सेटा सब जदि जानि परिबोनी देन करप्शन भी छुपी जिवो. बुझी पारछो. सो सेई जिंसोडा मझरे डिबेट रे चलथिला. ठीक अछि. एटा थिला कोन ठीक अछि. एटा कोन थिला erstwhile section 81G of RTI Act related एटा पढ दबो. ठीक अछि. information which relates to personal information माने सी कहउतला कि यदि पर्सनल इंफॉर्मेशन कार काढियार अछि ऑन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट यू कैन गिव हैला एटा कहउतला. एबे कोन कहउछि
आपको अमेंड कर देछंती you can't give anyone's personal interest सेटा से कहउछंती even though it will have a larger public interest still you can't give so कोन RTI Act रो टिके डाउनग्रेडेशन हेच से जिनसटा से कहउतले तापर कोन कहजे which of the following statement is correct regarding RTI Act it replaced the Freedom of Information Act 2002 it came into force on June 15 2005 any citizen can file an RTI application regardless of age first appeal has to be filed within 15 days of the decision first appeal has to be filed within 15 days of the information ठीक अछि एटा काई कहजे गलो OPSC रे बेले बेले तांकर टिके थाय कि तमे से माने दीडा ऑप्शन दे देबे जोडा कि एमते ऑप्शन थबो दीडा ऑप्शन करेक्ट थबो ता भितरे गोटे ऑप्शन इज 100% राइट और सेकंड ऑप्शन थबो कि 90% राइट से सेमता क्वेश्चन करंती ठीक अछि इट रिप्लेस द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट आगुर कोन थिला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट थिला 1923 रे हैला तापर 2002 रे कोन आसिला फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट देन 2002 रे आसिला तापर RTI Act 2005 रे आसिला this is the chronology you should remember it replace so I think it is the correct answer but out देखलो any citizen can file an RTI application regardless of age एडा भी तो है परिबो ना any citizen but you should go for the most favorable this one OPSC in the question भी दिए out होता it came into force in June 15 रे I think it June 15 रे पास हेतला but effective implementation was on October 12 the exact date तो हमें देखि दो June 15 से पास हेतला ओके हाँ सो फॉरेन सिटीजन तुम बुझी पर एनी सिटीजन क्या इंडियन भी हे परियो या फॉरेन सिटीजन भी हे परियो दैट्स आल्सो क्वेश्चन मार्क फॉरेन सिटीजन शुड नॉट गिवन एनी एक्सेस टू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स सेटा भी तो अछि ए फर्स्ट अपील हैज टू बी फाइल्ड विद इन 15 डेज ऑफ द डिसीजन मतलब तुम जो इन्फॉर्मेशन पाइलो ना PIO तुमको 30 दिन भीतर इन्फॉर्मेशन दे देला देन जदि ता ऊपर डाउट अछि देन यू हैव टू फाइल अपील कर ता ऊपर तुम अपील करे देन नेक्स्ट अपील होबो 15 डेज रे मते और इन्फॉर्मेशन दरकार मतलब जो दिन 30 डेज रे जदि इन्फॉर्मेशन देला ता नेक्स्ट 15 डेज रे तुमको जदि सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन दरकार देन यू हैव टू अपील विद इन 15 डेज सो दिस इज आल्सो राइट ठीक अछि तो नहीं when I think I did some wrong a first appeal has to be filed within 30 days actually 30 days not okay 30 days confuse हो गला so it replaced the Freedom of Information Act 2002 एटा ला most valid answer ठीक अछि तापर एटा अछि आउट consider the following statement with reference to the features of RTI in India the act prohibits the disclosure of information which comes under the Official Secrets Act 1923 the act has no provision for self disclosure of information by the public authorities if information sought under RTI concerns the life and liberty of it shall be provided within 48 hours what is the answer here RTI ro 3 okay the act obviously official secret act ठीक अछि तापर कोन अछि act has no provision for self of information for public act has no provision for self disclosure information for the ठीक अछि एटा भी ठीक अछि reference to RTI Act in India ठीक अछि तो if information sought under the RTI concerns the life and liberty it shall be within 48 hours second statement देखलो second statement देखो the act has no provision actually the question is a bit vague ना 2019 जो amendment है ना है ना act has no provision of self disclosure of information by the public authorities so this can be a wrong statement है ना से मैंने कोई ना तो मैं माने पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे पारिबोनी बुझी पाछ of any of the following ना the act has no provision for self disclosure of information by the public authorities this can be a माने ए जो स्टेटमेंट अछि ए टिके माने कोन कहछ ए टिके डिबेटेबल स्टेटमेंट हे पारिबो ठीक है आर आंसर देज बोते मो आंसर देनी मो दे दिबि यार या आर आंसर अबाउट 2 होबो ओके ओके थैंक यू माने RTI बिफोर 2019 देयर वाज सेल्फ डिस्क्लोजर तुम सब जिंस देई परिबो बट 2019 परे यू कांट गिव एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दैट्स व्हाई
so question bit माने बुझी पार टिके इनकम्प्लीट अछि ओके एमिति क्वेश्चन तो पचारंती ना जोटा कि तमरो जोटा कि सिविल सर्विस से पचारन जोटा कि वेरी डिबेटेबल क्वेश्चन है तबरे आउट क्वेश्चन consider the following statement regarding the RTI Act 2005 and the Digital Protection Data Protection Act 2023. The RTI Act allows disclosure of personal information if it is in public interest, but this provision was removed by the DPDA. ठीक है? The RTI Act allows disclosure of personal information if it is in public interest, but this provision was removed by DPDA. Tell me. The DPDA applies to all information whether digital or physical. The RTI Act is intended to promote transparency and accountability whether DPDA protects personal data privacy. बुझी पारछ? I think everything is right? बुझी पारछ? Personal information was removed, but this was removed by DPDA. Section 44(8)(1) clause J was amended. Personal information भी दिया जीवनी. So this is right. तापरे कौन DPDA applies to all information. Obviously, it applies to all information whether digital or physical. RTI Act is intended to promote transparency and accountability, but whereas DPDA protects personal data privacy. So this is also right ना? कौन? I mean RTI Act जोड़ा थिला, it had a balance between कौन? Transparency and privacy. बट जो DPDA एक्ट जो अच्छी पूरा मतलब इट फेवर्स कौन पर्सनल ना पर्सनल इनफॉरमेशन माने तुम पर्सनल इनफॉरमेशन काको दे परिबोनी ठीक अछि पर्सनल डाटा प्राइवेसी को से माने फेवर करछन सो दिस इज राइट DPDA अप्लाइज टू ऑल वेदर माने आज का डेट रे कोन सब जिंस फिजिकल भी हो जे the answer is all three. ठीक अछि the answer is all three. तो okay एटा थिला कि ISRO's LVM rocket launches GSAT 7R, the Navy's most advanced communication satellite. एटा न्यूज़ रे थिला LVM rocket fired satellite कौन GSAT 7R where देखो एक्चुअली कौन हेतला जब इंडियन नेवी जस्ट नॉर्मल ट्वीट कर देतला नॉर्मल ट्वीट को मतलब इसरो इज सेट टू लॉन्च जीसैट 7R एडवांस नहीं देखो एटला इंडियन नेवी तो इसरो जो थिला लॉन्च डे करतला इंडियास हेवी लिफ्ट रॉकेट से माने नॉर्मल ट्वीट करतले परे इंडियन नेवी आसी कहले ना इसरो इज सेट टू लॉन्च जीसैट 7R इंडियास मोस्ट एडवांस इंडिजिनियसली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट टुडे फ्रॉम श्रीहरिकोटा मतलब ए जो जीसैट 7R जोड़ा अछि ना this will used by Indian Navy ठीक अछि आगु जदि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होबो ना डिपेंड करे पाकिस्तान को कोन दरकार से तळे सो इट डिपेंड्स इंडियन नेवी तो केमिति यूज करबो एबे तो कोइ कि इंडियन नेवी बैटिंग भी करबो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 रे इट डिपेंड्स पाकिस्तान को क्या दरकार ठीक अछि तो देखो एक्चुअली कोन अछि एबे जो जीसैट 7R अछि ना तो इट हैज बीन लॉन्च्ड टू GTO suppose this is earth okay हमको GTO रो लॉन्चिंग करा देखो एट लिखा है successfully launched 4.4 ton of communication satellite CMS making the first time India's placed satellite based on geosynchronous transfer orbit from its own soil ए जिनसोडा सी कहउछन्ते देखो एडी कहउछ देखो geosynchronous transfer orbit रे कहउछन्ते तो एठी कोन जे इंडिया सैटेलाइट इज लॉन्चिंग इंडिया एबे कोन सैटेलाइट लॉन्च करछि कम एमते लॉन्च करछ एबे ओके दीज आर कोन एडा हला GTO बट आर फाइनल डेस्टिनेशन हला दिस वन एडा लागे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एडा हला GTO रे एथि पय लॉन्च करतला काहे कि LVM Mark 3 रो जा क्षमता अछि इट इज 4 टन टिल जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ओके बट एबे से जो
जो नहीं सैटेलाइट नहीं इट इज अराउंड 4.4 टन से ये कौन कर आपको आम जीटीओ रे प्लेस करूँ तापर लास्ट गोटे अपोजिट फायरिंग देकर आम कोड प्लेस करूँ जिओ स्टेशनरी ऑर्बिटर प्लेस करूँ बुझीपार तो एलवीएम मार्क 3 कैपेसिटी इज 4 टन बट दे हैव टेकन ए सैटेलाइट ऑफ कौन they have taken a satellite of 4.41 that is why it is India's one of the heaviest satellite to be launched कहेंगे आगुर जो heaviest satellite होतले ना से माने का तो करते Falcon 9 रू release कर दोतले या Ariana रू release करतले किंतु एबे कोन this is as it is 4.4 so माने ताकू आमे कोन आगे ट्रांसफर ऑर्बिटर ताकू प्लेस करिवो तापरे जियो स्टेशनरी ऑर्बिटर ताकू छडा जीवो with the help of apogee firing ठीक अछि this launch is significant एडा मु तुमको नेक्स्ट क्लास रे भी कहि देबी कोन अछि तार अछि this launch is significant as it reduces India's reliance on foreign agencies for launching the heavier satellites ठीक अछि so we will wind up the discussion here we have a class Chandra sir is will take the preceding classes next classes so hame next I think I have a class on the Friday today is Thursday I have class on Saturday so I will continue this session from here ठीक अछि so have a good day तुम टे रिवाइज करो कौन कौन अच्छी ठीक है हैव अ गुड डे